जैसे एक एग्जाम्पल एक देते हैं कि किसी को कोई बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस जगह पे रहना ही नहीं है, मुझे इस शहर में नहीं रहना है। बट देन नहीं रहना है या नहीं चाहिए पता है, बट क्या चाहिए वो अगर हम्म। आउटकम ओरिएंटेशन नहीं, वो क्लियर नहीं है इन योर हार्ट, तो वो अचीव करना मुश्किल है। तो वैसे वो राइट। अमित का एग्जाम्पल दे रहे थे जो। हाँ, तो इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं, ये उसमें डिस्कस हुआ था एनएलपी एट वर्क बुक में। टुवर्ड्स गोल एंड अवे फ्रॉम गोल्स। हम्म। तो अवर गोल शुड बी टुवर्ड्स, ना कि अवे फ्रॉम। जैसे मुझे इतना वेट लूज करना है, ये अवे फ्रॉम गोल है। हम्म। लेकिन आई वांट टू बी फिट एंड हेल्दी, ये टुवर्ड्स गोल है। तो टुवर्ड्स गोल एनएलपी में ज़्यादा फोकस करते हैं कि वैसे ही हमारा गोल हो। हम्म। ये हमारा डिस्कस हुआ था बहुत डिटेल में, आप थे नहीं उस दिन। अच्छा। आपका शायद ऑफिस का कॉल था, कुछ ऐसा था ना, आप बता रहे थे। ओके, अंडरस्टैंड द metrics and gatekeepers. To land her book deal, Ingram knew she needed an agent, a book proposal, and a business case for someone to publish her. By the time Adams Media bought Suddenly Frugal, she could point to blog traffic that hit 5,000 visitors some days, a promised promotional tie in with Recycle Bank, a company that distributes smart recycling bins nationally and rewards recyclers with points at various businesses, plus her proven ability, as evidenced by the Business Week article, to garner publicity. तो इसमें मेट्रिक्स और गेटकीपर्स की हम बात कर रहे हैं। तो बिफोर इनग्राम कुड पब्लिश हर बुक, शी इज टेलिंग, उसके पहले कोई एक सडनली फ्रूगल में जब तक उसने मीडिया, वो जो मीडिया था, शी गॉट इनटू ब्लॉगिंग एंड वहां से उसको ट्रैफिक मिला है। एंड बाय दैट टाइम शी इज ऑल्सो फीचर्ड इन बिजनेस वीक आर्टिकल। तो उसको उसकी वजह से पब्लिसिटी भी थोड़ा मिल मिल गया है। हम्म। In other words, she could show a publisher that giving her a chance wouldn't be a big risk. Once you know what the next level looks like for your career, you likewise need to figure out the metrics and gatekeepers. Sometimes organizations publicize these standards or else are fairly consistent in their decision making. Carol Fassbinder Orth, the Creighton University professor, profiled in chapter 4, knows that she needs 3 to 5 publications in major journals plus a certain volume of grants to get tenure. If she aims for the high end of this range or just over it, she will know her chances are good. If these standards aren't publicized or obvious, you can still figure them out. Interview several people who have attained the level you want. What do they think mattered? Who actually made the decision? What do these gatekeepers care about? The answer may surprise you. Many people think that if they quietly and diligently do the tasks outlined in their job description, coming early and staying late, they will be rewarded. This is not necessarily true. Often, you need a powerful champion, or two or three, who gets in her head that the organization will not function without you, and consequently, she will bang on the conference table during the decision meeting if she doesn't get her way. If you're serious about your career, it should not be hard to find 2 or 3 senior people in your organization or industry who honestly like you. But it is your responsibility to seek these people out. Figure out who might share your general attitude towards life and set up opportunities to work with them. It is also your responsibility to give these people a track record of results they can point to while pounding on the conference table. इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी जो मेरे करंट बॉस है उनका दे सकती हूँ कि पहले आई हैव वर्कड विथ हिम, सो दैट्स हाउ ही रेफर्ड मी टू माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन फाइनली आई एम वर्किंग विथ हिम इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट। इट इज, आई मीन, यू कैन स्टिल फाइंड 1 or 2 people who you can vibe with. यस, तो गेट कीपर्स का मतलब इसमें है बेसिकली डिसीजन मेकर्स। Hmm. जी। What should that track record look like? This differs between fields. In creative or knowledge based careers, you often need a portfolio showing what you can do. Unfortunately, many people, and particularly young people, recently sprung from school where you'd never do a project that wasn't assigned, believe they need to wait for someone to give them an opportunity to create this. In highly regulated fields, this may be true, but often it isn't.
At a conference recently, a young woman who wanted to get into public relations asked me how she could show results even though she had never worked in the field before. Since she had a good sense of what PR entailed, I suggested finding someone who needed help, a starving artist or a small nonprofit, and volunteering to create a publicity campaign. You don't need a license to do PR. If her press releases or even garnered coverage, she would have a portfolio every bit as impressive as someone with more experience. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि अब आपकी आई थिंक ये आपके भी काफ़ी काम आएगा कॉलेजेस में, क्योंकि स्टूडेंट से बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं, एक्सपीरियंस के बिना जॉब मिलता नहीं है। तो Hmm. एक तो तरीका ये है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में कुछ इस तरह की चीज़ें डालते रहो। बहुत सारे लोग अपना क्रिएटिव वर्क डालते हैं वहाँ पहले से ही, तो बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े लोग उनको नोटिस करते हैं और वो खुद से उनको बुलाते हैं। तो उनको ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल अपॉर्चुनिटी दे तो वो कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट करें। इनफॉर्मली वो अपना क्रिएट कर सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, कि मैं ये, जैसे कोई सपोज फोटोग्राफर है तो वो अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है, कोई सिंगर है तो वो अच्छे अच्छे अपने कुछ डाल सकता है, जिंगल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें करते हैं लोग। बाकी ये उन्होंने बताया, कोई स्टारविंग आर्टिस्ट है या स्मॉल नॉन प्रॉफिट है, वॉलंटियर करो, ये तो बहुत अच्छा चलता है आजकल। आई हैव ट्राइड इट अ लॉट। One thing to keep in mind as you build your track record is that people in almost all fields love numbers. They love numbers because impressions are fuzzy. Numbers, even when abused, appear to provide objective evidence to your argument. They convince people where words do not. You should use this to your advantage. While some people work in industries or jobs that make finding numbers easy, for instance, a fundraiser who clearly boosted an organization's budget by $1 million, the fact that your job doesn't involve many numbers doesn't matter. Find them, track them down, create situations where they will occur. Make them look good. The choir I sing in, the Young New Yorkers chorus, had a sense that we were reaching a young audience consisting of people who were not typical classical music patrons. But in order to make sure, we created a survey and pestered everyone at one particular concert to fill it out. We learned that 80% of our audience was between the ages of 25 and 35, and majority did not regularly attend other classical music concerts. Being able to cite that statistic has helped with donor outreach and grant applications. To flesh out the numbers, it also helps to have a certain number of testimonials to go with your track record. Imagine your career as a movie. Who would write the blurbs on the poster? What would you like them to say? If you work in a public manner, such as serving in an elected office, you might get spontaneous fan email. But in most lines of work, you'll need to get in that habit of asking people you work with to write short blurbs of your personal use about exactly why you are so wonderful. As a side note, these testimonials are great to haul out and read when you go through rough patches in your life and career. हम्म, काफी अच्छी इंसाइट है ये। मैट्रिक्स एंड गेटकीपर्स टर्म भी बहुत अच्छा है। तो कुछ हम इसका प्रैक्टिकल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अभी? जैसे 1 मंथ हमारा हो गया न्यू ईयर का, तो व्हाट आर द मैट्रिक्स विच वी कैन टेल और शो? जैसे सपोज इन माय केस कंटेंट क्रिएशन की बात है, आई कैन से आई हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 27 बुक समरीज, तो वो है मैट्रिक तो है ही। Yes. तो इस तरह से हर एक के केस में कुछ ना कुछ हो सकता है। आपके केस में 4 AM, 4 AM क्लब एक्सपर्ट। तो वो भी हो गया जी। इसमें कुछ ऐड करना है किसी को, ये आगे बढ़े?